Good morning, everyone, and welcome to today's Onboarding Essentials webinar. In today's webinar, we will talk about HDFC Securities products, pricing, and features. Also, we'll have an app walkthrough as to how the app works. Okay. We'll also have an basic understanding of what is equity delivery, what is MTF, that is margin trading funding, and futures and options. Okay. Last but not the least, we will talk about HDFC security research, okay, which is there in the industry for more than 25 plus years now. Okay. So let's get started. Before we start, I would like to display a standard disclaimer here. Okay, request you to read it carefully. All right, let's start with the pricing first. Okay, now I believe that everybody has opened the account very recent. Okay, and these are the charges which look like this. So if you have an HDFC Bank link account, okay, and this we are talking about the AMC charges. Okay, for first year AMC is absolutely free. Okay, but from the there is AMC charges applicable. Okay. Now, if you have an HDFC bank account linked, okay, the charges differ based on the category. And if you don't have an HDFC bank account linked, okay, the AMC charges is flat 750 rupees per annum. Okay. And if you've opened the account in HDFC Sky, then it is 20 per month. Okay. Again, even there, first year AMC is free. Okay. Now, if your account is inactive in the previous year, wow, because first year it is free, and if it is inactive and you come under the non-managed or regular category, then the MC charge is 750 rupees per annum. Okay. Um, if you come into the classic category and if your account is inactive, then it is 500 per annum. If you come under preferred category, it is 300 per annum. But if you come in the Imperial category, then there are no AMC charges. Okay. However, if your account is active in the previous year, when I say active, which means that you have traded, okay, then the AMC charges is 500 rupees per annum if you come under the regular category, 250 if you come under classic, and if you come under preferred, then there is no charges. Okay. For everybody's comfort, I'll keep this session in Hindi and English. Okay. So that everybody is comfortable. Now, if you open the account, if you open a corporate account, then it is 1500 per annum, and if you have an HF account, then it is 750 rupees per annum. Okay. सो दीज वर द चार्जेस, ये सारे चार्जेस थे. ओके, अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है और अगर आपका अकाउंट एक्टिव है तो ये चार्जेस होंगे फॉर एच डी एफ सी बैंक लिंक अकाउंट टू योर डीमैट अकाउंट. अगर यू हैव अ डिफरेंट डीमैट अकाउंट, सॉरी डिफरेंट बैंक अकाउंट जो लिंक्ड है आपके डीमैट अकाउंट से, देन द चार्जेस आर 750 रुपीज फ्लैट पर annum. Okay. टॉकिंग अबाउट डीमैट डेबिट चार्जेस, अभी डीमैट डेबिट चार्जेस की बात करेंगे तो अगर आपका एच डी एफ सी बैंक डीबी है, ओके, एंड अगर आप रेगुलर और क्लासिक कैटेगरी में आते हो, देन इट इज़ 0.04% और रुपीज़ 30 विच एवर इज़ हायर. ओके, अगर आप प्रिफर्ड इम्पीरिया में आते हो, देन इट इज़ 0.03% और रुपीज़ 30 विच एवर इज़ हायर. ओके, दैट इज़ द डीमैट डेबिट चार्जेस. ओके, अगर आपका एच एस एल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, देन इट इज़ 20 rupees per transaction. अगर स्काई है, then it is same 20 rupees per transaction. Again, for demat debit charges for corporate account, वहाँ पे it is 0.04% और रुपीज़ 30 whichever is higher. तो ये सारे demat debit charges हैं. Okay, just to give you an understanding of what exactly the charges are. charges कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है. The most common asked question जो हमको पूछा जाता है, that since everybody wants to trade in derivative segment, it is important, very important to activate your derivative segment. अगर आपका segment activate नहीं होगा, then you won't be able to place any trade in futures and options, or for that matter currency. ओके, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप आपका करेंसी डेरिवेटिव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट करें. जब आप अकाउंट ओपन करते हो, एट दैट पॉइंट इन टाइम यू हैव द ऑप्शन, आप सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हो. ठीक है. बट अगर आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे सेगमेंट एक्टिवेट नहीं किया है,
देन नो वरीज, आफ्टर यू ओपन द अकाउंट आपको ऑप्शन आता है, आप सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हो। अब सेगमेंट एक्टिवेट कैसे करना है, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑन द ऐप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज हु डोंट हैव द ऐप, request you to download the app, go to the app store or play store, okay, type in invest right, okay, आप जैसे invest right टाइप करोगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐप पॉपअप होगा, ठीक है। एंड यू सिंपली नीड टू डाउनलोड द ऐप, रजिस्टर एंड लॉग इन, ठीक है। ऐप होने से फ़ायदे ये होते हैं दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स, ओके, लेटेस्ट प्रोडक्ट, लेटेस्ट फीचर्स, ओके, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हम HDFC में करते रहते हैं, ठीक है। तो जिसके पास भी ऐप होता है, ही गेट्स द प्रिविलेज टू गेट ऑल द सर्विसेज अर्लियर, बिकॉज क्या होता है, वो ऐप इज़ ऑन द फिंगर टिप्स, ठीक है। ऐप की इंफॉर्मेशन आपको रियल टाइम मिलती है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। So when you go on the app, okay, right hand side top corner पे आपका नाम का इनिशियल होगा, you just click there। फिर privileges सेक्शन में you come on FNO privilege एंड करेंसी डेरिवेटिव privilege। तो दोनों में से कोई भी एक टॉगल बटन आपको ऑन करना है। जैसे आप टॉगल बटन ऑन करोगे, आपको डेरिवेटिव प्रिविलेज का एक पेज आएगा, विच विल से टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। आपको सिंपली एक्सेप्ट करके प्रोसीड करना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना है, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं। डॉक्यूमेंट कैन बी योर ITR एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ठीक है, योर बैंक स्टेटमेंट, ऑलराइट, एंड सो ITR एक्नॉलेजमेंट स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आप आपके सैलरी स्लिप्स, वो सारे भी आप डाल सकते हो, ठीक है। वट एवर डॉक्यूमेंट्स आर आस्क्ड, आपको वो डॉक्यूमेंट डालना है, आपकी इनकम लिस्ट सिलेक्ट करनी है और सबमिट करना है। वंस यू सबमिट इट, इट विल टेक 24 to 48 hours फॉर द टीम टू इवेल्युएट एंड देन एक्टिवेट योर सेगमेंट, ओके। सो now let's talk about how to activate DDPI, okay। अभी what is DDPI? DDPI is nothing but डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन, ओके। तो क्या होता है, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, तो there are high chances, okay, we have some question, okay, all right। सो whenever you open the account, okay, जब भी आप अकाउंट सॉरी जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो एंड जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, ठीक है, एंड ड्यूरिंग बाई ट्रांजैक्शन आपको कोई टिपिन पूछा नहीं जाता। बट जब कोई शेयर्स आप सेल करते हो, ठीक है, व्हेन यू सेल द शेयर्स, उस वक्त आपको एक टिपिन पूछा जाता है, ओके। अब वो जो टिपिन होता है, दैट यू गेट on your email, okay। Now, we tend to forget that tpin sometimes, we don't have that handy, ठीक है। तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा, बट अगर आपने डीडी पे एक्टिवेट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो टीपिन का हैसल, OTP का हैसल आपका चला जाएगा। तो जब भी आप कोई शेयर सेल करते हो, तब आपको OTP भी डालना पड़ता है, ओके, टीपिन के साथ। सो वो सारी हैसल आपकी ख़त्म हो जाएगी, राइट। एंड दूसरा है कि आप MTF फैसिलिटी अनलॉक कर सकते हो, दैट इज बाय स्टॉक्स एंड पे लेटर फैसिलिटी। अभी ये MTF फैसिलिटी है क्या, इन डिटेल मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा आगे, ठीक है। सो बेनिफिट्स क्या है DDPI एक्टिवेट करने के, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बाय स्टॉक्स पे लेटर फैसिलिटी अनलॉक कर लेते हो। आप आपका ऑर्डर जो प्रोसेस है, फास्टर ऑर्डर ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, टिपिन डालने की हैसल और OTP डालने की हैसल पूरी कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड दूसरा है कैशलेस ट्रेडिंग, ठीक है। अब कैशलेस ट्रेडिंग क्या है, एक एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि आपके डीमैट अकाउंट में यू होल्ड 1 लाख वर्थ रुपीज शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, ठीक है। अभी आपको ABC कंपनी के बारे में आपको पता चला है, एंड यू यू विश टू टेक पोजीशन इन दैट कंपनी, बट मान लेते हैं कि वो ABC कंपनी का जो शेयर प्राइस है, ओके,
फॉर दैट मैटर जितनी की आपको मान लेते हैं आपको 1.5 लाख की पोजीशन लेनी है, ठीक है। और आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही है, ठीक है। अब ऊपर के 50,000 आपके पास कैश में नहीं है, बट यस आपको आपके पास इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स होल्डिंग में है किसी और स्टॉक्स में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वो पर्टिकुलर स्टॉक को आप प्लेज कर सकते हो और एक मार्जिन ले सकते हो, ठीक है। आफ्टर 35% हेयर कट होके आपका जो 1 लाख रुपए के पोजीशन है, जो स्टॉक्स है जो आपने होल्ड करके रखे हैं इन योर डीमैट अकाउंट, ठीक है, आप उसको प्लेज कर सकते हो। एंड यू विल गेट एन एडिशनल मार्जिन। वो मार्जिन लेके आप यू कैन यूज दैट मनी टू trade in whatever stocks XYZ stock you wish to trade and take position in, ठीक है। So that is cashless trading. So that is basically the benefit of activating the DDPI. So I will show a demo कि कैसे करते हैं ऐप पे, ठीक है, इन द लेटर सेक्शन, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट MTF, ओके, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। एग्जैक्टली है क्या? अब इट्स वेरी सिंपल, बट या इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी जैसे आपने बाय नाउ पे लेटर तो सुना होगा कि आप कुछ सामान अभी खरीदिए एंड उसके पैसे आप बाद में दे दीजिए EMI में, विद इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। अ सिमिलर कंसेप्ट बट इन स्टॉक्स, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम कि लेट्स टेक अ क्लासिक एग्जांपल। लेट्स अज्यूम कि MRF अभी फिलहाल 1 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और आपको MRF के 4 शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। तो बट आपके पास तो 1 ही लाख रुपए है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो आप एक ही स्टॉक खरीद सकते हो लॉजिकली, ठीक है, और टेक्निकली। बट विद द हेल्प ऑफ MTF आप 4 लाख की पोजीशन ले सकते हो, मतलब आप 4 स्टॉक्स बाय कर सकते हो। वाई? बिकॉज आपको जो बचे हुए 3 लाख है वो आपको HDFC एज अ लेवरेज दे देगी, ठीक है। नाउ इसमें क्या होगा, फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स कि यू नो आप आपकी जो एनहांसिंग पावर है, ठीक है, आपकी जो परचेसिंग पावर है बेसिकली उसको एनहांस कर रहे हो, ठीक है। आप एक के पैसे में आप 4 स्टॉक्स बाय कर सकते हो, नंबर वन, ठीक है। इसमें आपको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर रिटर्न्स है, ठीक है। लॉन्ग होल्डिंग पीरियड्स है 275 डेज तक, ठीक है। अब इसमें एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर रिटर्न्स है आपको, ठीक है। एंड इसमें इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे 18% लिखा हुआ है, सो 18%, 14, वो वेरी करता है, सब कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, ठीक है। नाउ इसमें कैसे होता है, लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने पोजीशन ली ही 4 लाख की पोजीशन ली। तो 3 लाख रुपए जो HDFC ने आपको दिए हैं, ठीक है, उसको आपका मंथली इंटरेस्ट, एग्जांपल लेते हैं, मंथली इंटरेस्ट आपका 1.5% पर मंथ लगेगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए चलो पकड़ लेते हैं कि 1% लगेगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा कि 3 लाख पे 1% आपको लगेगा एवरी मंथ, ठीक है। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऑन अ डेली बेसिस, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 लाख का 1% आपका 3,000 हो गया। तो मतलब आप अगर ये पोजीशन 1 महीने के लिए होल्ड करोगे तो आपको 3,000 रुपये एज एन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने के लिए करोगे तो 6,000 करना पड़ेगा, ठीक है। वॉट एवर एक्स नंबर ऑफ डेज यू होल्ड अ पोजिशन, वो नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि आपने पोजीशन ली और जो स्टॉक है, ठीक है, MRF, वो 10% ऊपर चढ़ गया, ठीक है। अभी उसका जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 1,10,000 है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी पोजीशन 4 लाख की है, तो आपकी जो पोजीशन की वैल्यू हो जाएगी 4,40,000, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो है वो 1 महीने में ही हो गया, ठीक है। आपने ये पोजीशन में ट्रेड लिया ये सोच के कि यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस स्टॉक, कि यार ये चढ़े, ये ऊपर भागेगा और वट एवर, ठीक है, बेस्ड ऑन योर अजम्पशन और बेस्ड ऑन योर रिसर्च, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 10% ऊपर भाग गया 1 महीने में, और फिर आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, तो आपकी जो वैल्यू है वो 4,40,000 हो जाएगी। 3,000 आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो
आपकी पोजीशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लाख, 4,36,000 हो जाएगी। जो 3 लाख थे वो आप ऑब्वियसली HDFC को दे दोगे फिर से, जो है बचे हुए। अब बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो 36,000, वो आपका होगा। ठीक है। तो बेसिकली आपने 1 लाख रुपए लगा के 36% प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, विदाउट यूजिंग योर मनी। ठीक है, आई मीन यस, यूजिंग योर मनी, यूजिंग 1 लाख एज एन इनिशियल कैपिटल, बट बचे हुए 3 लाख आपके हमने फंड किए थे। ठीक है। सो आपने 36% कमा लिए, बिकॉज आपका इनिशियल तो 1 ही लाख रुपए लगा, आपने 3 लाख रुपए हाँ लेवरेज किए थे HDFC से, आपने उसका इंटरेस्ट भी दे दिया, और आपने वो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया था वो भी दे दिया। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने MTF में पोजीशन नहीं ली होती, तो करेंटली फिर ये 1 लाख का आपने एक स्टॉक खरीदा होता, वो 10% ऊपर जाता तो आपको 10,000 प्रॉफिट ही होता। ठीक है। तो कहाँ 10,000 और कहाँ 36,000, गुड 26% का आपको फर्क उसमें आ गया है। तो दैट इज द पावर ऑफ MTF। ठीक है। आपको रीपेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है। आप जितने दिन पोजीशन होल्ड करोगे उतने दिन की ही आपको इंटरेस्ट लगेगी। ठीक है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि कैसे MTF वर्क करता है, जैसे आपने समझे, ये सिर्फ एग्जांपल है। ओके, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन और समथिंग। एंटर द स्टॉक नेम, आपने क्वांटिटी डाली, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो है 486 है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि यू नो आपको सिर्फ 13,630 लगाने हैं, बाकी बचे हुए 35,040 HDFC फंड करेगी। आपकी जो टोटल पोजीशन होगी वो 48,670 होगी। ठीक है। तो आपके जो भी प्रॉफिट होंगे, जो भी लॉस होंगे, ये पूरे इस पे होंगे, ना कि इस पे होंगे, और ना कि इस पे। ये पूरा जो अमाउंट आपका जो इन्वेस्टेड है वो विल बी दी पोजीशन अमाउंट। ओके। अब इसका प्रोसेस क्या होता है MTF का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी आपका कैश बैलेंस है लिंक टू HDFC बैंक अकाउंट, आप वो खरीद सकते हो। ठीक है। या फिर आप आपका जो डीमैट अकाउंट में होल्डिंग है, ठीक है, आप उसको प्लेस करके यू कैन ऑल्सो इनिशिएट MTF पोजिशन। ओके। सो मान लो आज आपने MTF की पोजीशन ली, T+1 डे पे आपको शेयर्स आ जाएंगे, T+2 डे पे आपको MTF प्लेस करने की लिंक आ जाएगी, वो इम्पोर्टेंट है। आपको शेयर्स प्लेस करने ही होंगे। T+3 पे आपको पोजीशन, अगर आपने प्लेस नहीं किया तो T+3 पे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, वो एक मैंडेटरी रूल है रेगुलेशंस का, कि प्लेजिंग द शेयर्स। ओके। So let's come to the app section now. Okay. Quickly, I'm sharing my screen with the app. Just give me one moment.
Sorry for the late response, guys. I'm facing some technical issue here, okay, with respect to the app. However, I will share my screen and show you how exactly it is. Okay, just give me one moment. So one of my colleagues will explain this. Okay, just give me 1 second. I'm sharing my screen. So this is overall about your account setup. So you can activate this DDPI also, and you can activate the derivative segment also. I will also show you live on mobile app. Let me share my mobile screen. Okay. So this is a recording which my colleague has shared. Okay, currently I'm facing some issue with the. Yes. The first thing, you have to download a mobile app from the App Store or your Play Store, which is HDFC Security Invest Right. Once you download it, the session will be only for 35 minutes. Okay. So this is a mobile screen. For login, first of all, आपका जो भी login ID आपको mail आया होगा, on that ID you have to log in the mobile app. Once you log in, so this is the first landing page. Now, this is a dashboard page. First, I will show you this derivative wala things. On right hand side, there is a hamburger menu. Once I click, I am able to view this derivative privilege. If I want to activate, I have to click on enable. I will be landed on this page. I have to select my income range and the bank statement via OTP. तो अगर आपका बैंक अकाउंट ये कोई भी बैंक अकाउंट में है, then you no need to upload a bank statement. The bank statement will be fetched automatically from your bank. अगर आपका लिस्ट ऑफ बैंक में अगर आपका बैंक नहीं है, then you can manually upload the documents. So this all are the list of documents. The derivative segment. Second thing which I want to show the profile section. Once I click on the profile, I can check my email ID, mobile number, all basic details. If I want to update anything, then there is a edit KYC option is also available that you can edit your mobile number or email ID. The setting option, under the setting option, you can reset your PIN, even you can enable the biometric. And also there is a preferences. As and when जब भी आप मोबाइल ऐप लॉगिन करते हो, आपको कौन से पेज पे डायरेक्टली लैंड होना है, that also you can select. You can also customize your dashboard. Whatever things you want up and down कर सकते हो. There is a general order setting. On the top of corner, there is a Nifty, Bank Nifty, Sensex. What all indexes you want, that also you can select from here. And there is a order panel. तो आप जब भी order करना चाहते हो, तो on which segment you want to buy, at what product type you want to buy, you want to buy into delivery, yeah, intraday or e-margin, that also you can select. Also you can select the by default quantity. तो जब भी next time आप order करोगे, you no need to select every time all things. It will be automatically default will be saved. Now I will show you the overall dashboard. So this is first landing page, and where all the details, all the required details are available.
On the first of top of the corner, there is a Nifty, Bank Nifty, Sensex, all indices are there. If you click, so अगर आप derivative trader हो या options trader हो, then you no need to find the option chain again and again. Directly click on the indices, the option chain will be already there, from where you can place the order. Okay. The second section is the spotlight section. So whatever the latest things, what is the latest developments which are displayed over here. Third thing is what's on your mind section. तो वहां से आप चेक कर सकते हो IPO. First thing is IPO. If you want to place a IPO order, you can directly place it from here. You have to click on apply. Now there is a two option, UPI and ASBA. So अगर आपका DDPI is enabled, then you can place an order via ASBA. So your fund will be automatically hold from your HDFC bank account. अगर आपका DDPI enable नहीं है, okay, and otherwise अगर आपका non HDFC bank account है, then you can select this UPI option. You have to enter your UPI. You can apply for the IPO. You can also check the order book of the IPO. The second section is the basket investing. So this is a small cash thing. All the ready-made baskets are available. So this is somewhat 2081, which is our Diwali fix. So on a single click, you can buy all our Diwali stocks. Once you click on this basket investing, you will be landed on the small cash page, and you can also check what all stocks are there, and I can invest in a single click. The weightage is also mentioned. So whatever the fund, if suppose if I want to purchase a 1 lakh rupees of share, so there is a 10% in each of the stock will be invested. So there are many free baskets are there and many paid baskets are there. And also the theme and all details are already mentioned over there. You can check and you can also take the decision. There is a mutual fund section is there, where you can check all the mutual funds. All the mutual fund recommendation is also there. Also, you can explore the fund via category, which is large cap, mid cap, small cap, debt fund. On a single click, you can explore all the funds. Also, you can filter out via your return, 5 years return, 3 years return. You can also sort it down and you can purchase a mutual fund also. If I click on this, then there is a purchase order or the sale. If you want to purchase a lump sum, then you have to click on the purchase and you have to enter the amount and click the order. And if you want to do the SIP, and you have to click on the SIP and you have to select the date and everything. Okay. The third section is the research. Okay, the research, you can click on the bottom of the page. There is a research section. In fact, you can also select the research. So this is our research page where you can explore equity, derivative, and mutual fund research. Once you click on the equity, then all fundamental calls are there, all technical calls are there, all trading calls are there. The trading calls are generally the futures, options, even the intraday picks are there. These are the technical picks. Even the technical picks, there is a mention, if there is a call of the MTF, then the MTF tagging is also there. Also, you can click on the detail. You can explore what is the target, stop loss, what is the time horizon. In fact, entire report is also there. What is the reason behind the purchasing the stock, that is also mentioned. So this is how you can explore our research section and you can take a decision as per your risk appetite. Then the next section is your MTF. So this is entire new section of the MTF where you can check your eligible stocks. So there are roughly 792 stocks are available into MTF. You can explore all the stocks. Also, you can check how much funding is available in particular stock and you can buy it directly from here. Okay, second is your margin calculator. Okay, you can check the margin. Let's say if I want to buy ITC and the 100 quantity, you can check.
Then as a user, you have to pay 13,000, rest 34,000 will be funded by the HDFC Security. So the same stock, if you buy into the delivery, you have to pay entire 47,510 rupees. And same stock, if you want to buy into the MTF, then you have to pay only 13,302 rupees. Then all the recommended stock into MTF, that also you can explore. Even you can explore our MTF position. You can also check this all stock I have purchased into the MTF. Also, you can check for all the stocks, whatever the amount I have paid, what the amount is funded by the HDFC Security, and what is my total investment value. Okay. Next section is a superstar portfolio. Once I click on the superstar portfolio, here you can find the portfolio of all the famous personality and the individual investor. Let's see, if you want to explore a Rakesh Jhunjhunwala portfolio, you can explore what all things Rakesh Jhunjhunwala are currently holding. What all things are increasing last quarter, what all stocks is a decrease in his portfolio in the last quarter. So all the famous personality portfolios are readily available. In fact, the FII portfolios are available, in institutional investor portfolios are also available that you can explore and you can pivot. Section is the expert recommendation again. The latest recommendation you can find it from here. These are the market movers, which means your top gainer, loser, your futures and option price based, volume based. You can explore all things from this section. This is a FII and DI activity. You can explore FII and DI activity. There is a bulk deal and block deal section is also there. Advanced screener. So there are roughly 200 advanced screeners are available both for equity and derivatives. You can explore all the screeners. Let's say shareholding pattern. I can also explore the FIA holding quarter on quarter. I can check this holding for the FIIs. Same way, I can also check a promoter holding where the promoter reduced the holding, promoter percentage above 60%. I can explore all the stocks where the promoter holding is more than 60%. You can explore all the screeners. These are the basket investment ideas. There is an event section. So result or bonus dates are there. And the market top news. So all the possible detail, all the required detail on the daily basis, this all things are available on the dashboard page itself. Section is a watch list. In watch list, there is an explore section. So there are ready-made watch lists are available. If you want to check, let's say technology stocks, so there is all technology stocks are available on a single click. If you want to check a Nifty 50 stocks, a BSC Sensex stocks, of a pharma stocks, 52-week high, 52-week low. So there are ready-made watch lists are there. In fact, you can create your own watch list. On the right hand side top, there is a search panel and you can add a stock by clicking just on the save button. This TCS will be added in my portfolio, in my watch list. Okay, there is a TCS. Also on the watch list, the holding tagging is there. So you can check the bag is there and the quantity is also mentioned, which is one. Also, you can check the stocks are into the losers or gainer. What if there is any event that also in this, let's say ONGC, there is an event. Once I click, I can check which is in top gainer. There is a dividend of 6 rupees. Okay, so if there is an event that also you can check. If the stock is recommended by HDFC Securities, then this batch icon is there. Let's say in Reliance, so there is a buy recommendation from the HDFC Securities. That's why there is a batch. So you can find all the taggings.
The next section is a portfolio, from where you can check your entire portfolio, what all stocks are available and what is your gain or loss. This is entire your demat holding, from where you can check what all stocks are available in your demat account. And the third section is what all stocks you have purchased into the MTF. So there is a three section. One is your MTF, second is your demat, and third is your overall portfolio. From portfolio section, you can check all your stock which is are in demat, MTF, or your pledge holding. Now, if you want to pledge any share, then you have to click a demat. And let's say if I want to pledge this Bank of Baroda, I have to click on the pledge, and I have to enter the quantity. Let's say one quantity, and I have to select on the hold. Then this request is taken, and I will get the limits on my this Bank of Baroda holding on instant basis. So this is how you can pledge your holding and take the additional leverage. The same way, if I want to release, then I have to select the pledge, and I have to select the quantity, and I have to click the release. So this is how you can pledge your holding and release your holding. Same way in MTF. So this is my MTF holding, and let's say I don't want to pay the interest. Then I can convert the share from MTF to delivery. This is how you can convert. Let's say if I click on the Canara Bank, then there is an option to convert to delivery. I have to enter the quantity and I have to submit. Then this share will be converted from MTF to delivery, and my interest will be stopped. Now, let me place one order. Let's say if I want to buy a Canara Bank, this is there. Okay. So let's say if I want to buy a Canara Bank, I have to click on the buy. Then first thing I have to select the action, which is NSE or BSE. There is a product type. So if I want to buy a share into the delivery, then I have to select the cash. If I want to buy a share for the intraday, which is up to 320, then I have to select this intraday option. On 320, my position will be auto square up. And if I want to buy share into the E-margin, then I have to select the E-margin. So you can also check what is the margin is required. So for cash segment, I have to pay entire 103 rupees, while in MTF, I have to pay only 36 rupees. You can also check on the bottom of the page, there is a MTF tick is there. Okay. The MTF tick is there. You can check what is the margin required for the MTF. Let's say if I want to buy this share into the cash segment, then I have to select the cash and just hit buy, confirm buy. The fund will be held from my HDFC bank. And yes, my order is done. I can check my order from my this order pad. One quantity I have purchased. Also, you can check your all open orders, closed order, GTD orders, toxic orders. Same way, there is a position section is there. So all your today's position, in fact, your future and option position, you can check it from here. And this is your mutual fund order book, where you can check all your SIP and lump sum orders. Also, if you want to place, let's say a stock SIP order. Now, what is this stock SIP? It's just like mutual fund SIP. Mutual fund में जैसे आप SIP करते हो, in same way, you can do the stock SIP. You have to select the quantity and you have to select the frequency, whether it's daily, weekly, fortnightly, monthly. That also you can select. You have to create one basket. I want to purchase a quantity, let's say one quantity on daily basis for the 6 months,
and my start date, let's say from the 20th of November. I have to select the next and add. Then on every 20th of the month, one quantity will be added. From the 20th of November, every day there is a one quantity will be added in my portfolio. So this is how I can place toxic orders. And same way, if you want to place a GTT order, which is full still triggered, okay, full still date. So you have to select the quantity and price, and let's say the same NTPC, if I want to buy at 350 rupees, and let's say if there is a 21 December तक जब भी मेरा ये 350 rupees आएगा, then the NTPC will be buy. So this is how I can place a GTD order also. Also, I can set the alerts. So if you want to set the alert, let's say a price, if let's say the price will come 250 rupees, then the alert will be triggered. So this is how you can set the alert also. So this is overall demo for the mobile app. Let's say if you want to place a order through your web trading platform, I will show you the web trading platform also quickly. For that, you have to log in this hdfcsec.com. On the right hand side top, there is a login window is there. You have to enter your login ID. OTP will be received on my mobile number. From here also, you can place a buy order or a sell order also. Also, or your statements. Likewise, your PNL, your capital gain. Let's say if I click on the PNL, I can explore entire my PNL. You can download also, you can export to Excel or a PDF. If you want a asset type, let's say if I want to only check for equity, mutual fund, derivative, that also with charge, without charge, that option is also available. The same way, you can also explore your capital gain, where you can check your what is your speculative, short term, long term. Also, all other reports like your contract note, ledgers, your MTF interest report, all the reports are available over here. You can also check your mutual fund reports also from the mutual fund section. Also, you can place the IP order from this window. So this is overall about this web trading platform. Now, if you have any doubt, then you can share in this. All right, so I hope that you were able to understand what was explained in the video. Okay, extremely sorry that couldn't share the live thing because I'm facing some issue with the app. Okay, so yeah, that was the overall experience about the app. Okay, also I would like to share my screen and show you the technical performances for FY 24-25. Okay, so these are some technical performances. Um, we have been there in the we have been there in the industry for more than 25 plus years now. Okay, our research is one of the best in the market in the industry. You can definitely leverage our research, and if you have any questions, please feel free to drop in the chat box. I'll be more than happy to answer that. Thank you.
All right, then if we don't have any questions for today, we will conclude the session. Thank you so much for attending the session and have a lovely investment journey ahead. Thank you.